Hello guys, so how are you? This is me without any makeup. I've done only brows and not even moisturizer, so let's start the makeup. And for moisturizer, I'm using Nivea cream. Nivea Care, the sensitive for sensitive skin. And if you follow me on Instagram, you might know that I have a really extreme sensitive skin. Putting on my face. I'm going to do my under eyes. For that, I'm using this NYX color correcting palette. And firstly, I'm going to take this orange. So you don't need to put a lot of stuff when you are covering your under eye dark circles, just little bit. You know, the main point of using the color corrector is to balance the darkness under eye. So mostly for grayish under eyes, I use orange color corrector. Yellow color corrector from the same palette, this one, and putting it on my under eyes. Age Rewind Concealer, shade 07, and blending it really well. So actually ये बहुत ज़्यादा हो गया है, इतना ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बहुत ज़्यादा ले लिया कंसीलर. इसको हम फाउंडेशन से ब्लेंड कर देंगे. And now I'm going to put some contour. So this one, the shade for the contour from the same NYX palette, and using my fingers again. जो hollows होते हैं ना cheeks के, उसमें उसको हमें और कम दिखाना है, तो और hollow दिखाना है ताकि ये cheekbone ऊपर आए. तो cheekbone को हमें highlight करना होगा और इसको dark करना होगा, तो इसलिए darker shade लिया है. And then blend it. So I'm extending it downwards. इसको हल्का हल्का blend हो जाएगा और बाद में फाउंडेशन के साथ इसको अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा. Coming to the eye makeup, I'm taking this sauced shade from Naked Heat palette and putting it all over my eyelids. It's a kind of base I'm creating and इसके ऊपर बाकी सारे colors आएंगे. Then I'm going to take this shade Heat Devil, which is kind of a copperish color, and इसको मैं अपनी पूरी eyelids पे लगा रही हूँ. So only up to the crease. उसके बाद मैं इसको अपनी lower lash line में भी लगाने वाली हूँ ताकि जो वो थोड़ा उठ के दिखे मेरा lower lash line, because concealer के कारण it gets very pale, so it's better to put some color over it. And then create some shape and extend the shadow and blend everything really well. उसके बाद I'm taking the same shade जो मैंने पहले लगाया था sauced, और I'm blending the outer edges of my eyeshadows. Now I'm going to put some darker shade on the outer edges. The shade name is Ashes, and shadow look is done. So this is how it looks. Then I'm using liner, a liquid liner from L'Oreal, and lining my eyes. So not any fancy look, just normal winged liner. And then I'm curling my eyelashes. Then using Estee Lauder mascara over my eyelashes. And now coming to the face, I'm going to mix two shades, like two foundation, Fit Me Foundation from Maybelline, taking shade 250 and 220, applying on my face using a beauty blender. Blend everything really well so that the overall tone on your face looks even. So ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक जगह white हो गया और एक जगह dark हो गया. So ये बहुत ध्यान रखना रहता है कि अच्छे से सब जगह फाउंडेशन लगना चाहिए. And never forget your neck. नेक में भी लगाना है फाउंडेशन हर बार हमको. And now I'm setting my foundation using setting powder from MAC. Now putting some bronzer. This is from Bourjois, and ये फेस पे थोड़ा कलर देता है ब्रॉन्जर, क्योंकि फाउंडेशन से अपना फेस काफी वाइट दिखने लगता है, तो एक जैसे दिखने लगता है, तो फिर से कलर लाने के लिए इट्स बेटर टू यूज ब्रॉन्जर. देन मैं ये ब्लश यूज कर रही हूँ फ्रॉम लॉरियल. इट्स शेड इज पीच एंड इट्स अ रियली ब्यूटीफुल कलर इफ यू हैव ब्राउन स्किन. बहुत ही सुंदर कलर, ये बहुत अच्छा दिखता है. नाउ पुटिंग सम हाइलाइटर ऑन माई इनर आई कॉर्नर. सो दिस इज़ अ रियली गुड ट्रिक. अगर आपके आईज बहुत पास पास हैं और आपको अपनी नोज और आईज के बीच में थोड़ा गैप दिखाना है, तो हल्का सा हाइलाइटर अपने इनर आई कॉर्नर में लगा लो, तो वो ऐसे सेपरेटेड दिखते हैं और बहुत अच्छा दिखता है. Now taking this liquid lipstick from NYX, the shade name is Seduction, and putting it on my lips. And last but not the least, taking some highlighter and putting it on my cheekbones.
and my brow bone. अच्छा दिखता है highlighter लगाने से. It's like glittery sparkle. So look अच्छा आता है. And the look is done. I hope you like this look and this will help you for getting ready. And please subscribe to my channel and I will see you in my next video. Bye bye.